So a very formal welcome to Sunil ji, to Rajesh and to Sunil. And thank you for being here. We will look at the 13th and 14th gem of the 108 gems that we are doing as a selection from the Upanishads. Now getting back to the logic of the selection and to repeat it once again, we have the division between Dvaita, Advaita, Vishishta Dvaita and Advaita. Okay. So we have done Dvaita. Now we are looking at the Vishishta Dvaita. There will be a personal sort of, indication of the Supreme, a personal form of the Supreme. And in Advaita, that would not be there. So when we look at Vishishta Dvaita, no. So we are still actually in the flow of Dvaita and not yet in Vishishta Dvaita. My apologies for having incorrectly put the progress. So we are still within Dvaita. And within Dvaita, we are looking at Dvaita looks at two categories, matter and spirit. And there were some general introductory shlokas that were represented by gem 1 and 2. Then in gem 3 to 9, we looked at the Panchamahabhutas, the Tejaha, Apaha, Vayu, Akash, Prithvi, so matter. And now in the next part of our Dvaita, we are looking at spirit. So in spirit, in gem 10 and 11, we did, the representation of the gods. Then we did the 5 sheets, Annamaya Kosha, Pranamaya Kosha, Manomaya Kosha. And we will now be doing, in this particular, we'll be doing gem 13 and 14, which is a waking state. And then 15 and 16 will be on the dream state. So these are the part of the 2 units that we have here for today. So let us look at how to understand the waking state and the dream state. So here we are. So it is, I think that's a mistake. It is still the Dvaita. So we'll put it as spirit. Yeah. So Dvaita. Okay. Now we have this extract from the Brihadaranyaka Upanishad, and I will chant the extract first, and then we look at the meaning of the extract. So this is from, now the Brihadaranyaka Upanishad, as you know, is one of the longest and the biggest Upanishads. And the structure of it is that it has got a number of chapters and sub-chapters and sub-chapters, which is why you have 3 numbers which are used to index the particular shloka concerned. So we have 4.3.7, and this is how the pronunciation of this particular shloka goes. I would not call it shloka because it seems to be more of prose, but I would say a chapter of the Upanishad or portion of the Upanishad, or actually it is prapataka. Prapataka is one of the terms that is used, but nevertheless, those are all ways in which you depict certain parts of the Upanishad. But let's look at what this particular part has to say. So, Katham Atmeti Yoyam Vijnanamaya Praneshu Hridyantara Jyoti Purusha Sa Samana Sannubhav Lokan Loka Vanu Sancharati Dhyayativa Lalayativa Sa Swapno Bhutvemam Loka Mati Kramati Mrityo Rupani. So before we go to the meaning, let me look at the word to word. Now, word to word is not available for the Brihadaranyaka Upanishad. So I am going to pull out the particular shloka. I was not able to key it in. Perhaps we look at a better way of doing this. So 4.3.7, we will go word by word. So looking at, so Katham. So Katham means which. Atma iti. Atma is the self. Iti is this. So Atma iti is this. Ayam. Yoyam. So Yaha and Ayam. Ayam is again this.
Then, of course, this is given in the slightly different sequence. It's given in the sequence of the Anvaya, but nevertheless, I'll put it back in the Padachet sequence. So, Vijnanamaya is associated or reflected in the intellect. So, Vijnanamaya is to deal with the kosha or the part of our antaranga or antakarana called the buddhi. So, Vijnanamaya. Then praneshu, the praneshu is amidst the various organs. Hrudyantaha, within the heart. Jyoti is light. Okay. Purushaha is obviously the infinite entity, the Brahman that is within the heart. Samanaha is similar to. Then, therefore, what do we have here in the first part? We seem to have that the buddhi is able to find out something within the heart. I'm just giving a broad meaning. We will look at the deeper meaning within the heart, and this seems to be equal to san ubhav. So, sanubhav is sun is being, ubhav is both. Loko anusancharati. Loko anusancharati is two lives. Anusancharati is anusancharan karna, ghumna between the two. Dhyayati is, dhyan, thinking. Iva, lelayati is quivers, kampna. Okay. Iva is Iva. Okay. Then swapnaha, yeah, we have swapna is dream. Bhutva imam, becomes. Lokam atikramati. Lokam atikramati is it goes beyond the world. So, of course, when you look at the words, at least we have a basic sense of the meaning, but let us look at how the flow is. So, I'm going to give you two flows. One flow is from the very book that I'm reading, which is the Brihadaranyaka Upanishad by Swami. No, it is just a series published by, let me see who is the Swami here. No, there is no Swami. I think it is Swami Madhavananda and Jagdiswarananda who prepared it, but their name does not appear on the title page. So what do they translate it as? Which is the self? This infinite entity, it more or less follows what we have pasted here. Which is the self? This infinite entity, this Purusha, which is reflected in the intellect, which is identified by the intellect is what this says here. So, which is reflected in the intellect, which is Vijnanamaya, and is in the midst of organs, and which is amid the organs, which is the self-effulgent light, the self-indulgent. Self-effulgent is light which does not need any fuel. It is by itself light. So that's what it means. It does not need any support or external source. Okay. Self-effulgent within the intellect. Okay. Stimulating the intellect, it roams between this and the next. It thinks as it were and quivers as it were. For being one with the dreams, it goes beyond this waking world, which represents the forms of death. Okay, so let us try to make a little more sense of this particular shloka. So the question, of course, this is a series in the conversation. So the question is, Katham Atmeti, what is this Atma? Okay, then the answer or the response to that given by the saint is that this Atma is reflected in the intellect. So Atma is of course behind the Buddhi, but it is reflected in the intellect and it is amidst all the other organs of the body. And within the intellect, the Atma is like a light, which doesn't need any source of power because it is the source of power. It stimulates the intellect. So stimulating the intellect, which is the statement, made by, where is that particular? Vijnanamaya praneshu hridayantaha samanaha sanna ubhau anusaranchi dhyayati. So I think that is a translation. There is no direct word which is indicating stimulating the intellect. It roams between this and the next life. So the point that is being made here is that in this life, the buddhi is
brightened, the buddhi is lightened by the Atma. But the Atma is also there in the next life. So the Atma is something that's there in this life and the next life. So it roams between the two lives. It thinks as it were and quivers as it were. So why are they using the word kampana? Okay, think and quiver. So it is indicating the fact that while the Atma itself is totally motionless, because the Atma is associated with the intellect and the intellect thinks. So when the intellect thinks, you can use the phrase that wo sochta hai, wo kampta hai, in the sense that it has a sense of vibration. So when you say it quivers, you mean that it is moving and it is vibrating, and that is a vibration of the thinking, the vibration of the intellect. Okay. For being one with dreams, it goes beyond this waking world. Okay. So this intellect is powered by the Atma, and there are two aspects of this. One is that it is a part of the dream world, and the other thing is it also goes beyond the waking world. So the waking world, so there are two ways in which you can go beyond the waking world. One way is to go into dreams. The other way is to go beyond life, this life. So that is what is indicated here. So it wanders between the two worlds. It thinks as it were, it moves. It is identified with dreams. It transcends this waking world, which represents the form of death and its offshoots. So when it goes beyond the waking world, see, one is it can go into a dream world. The other thing is when it goes beyond the waking world, that that world beyond this life is equivalent to death, because obviously it is only when the body dies that you're able to go beyond. So what do we make of this broadly now that we have looked at the word-to-word meaning as well as a construction? So this is simply perhaps indicating that the Purusha in the Deha, which in the Bhagavad Gita is called Dehi or Kshetragya, or Atma, that's the most common term, is the one that powers the intellect and is the one that gives prana. So prana is a form of the Atma. It is a power of the Atma. और उसी से जो है कंपना होती है. अगर प्राण शक्ति नहीं है तो हमारे अंदर प्राण नहीं है. And when something is devoid of prana, it is very obvious that it is not alive. So the indication of life is the presence of, is the manifestation of the Atma's presence by the Kampana and by the thinking. And of course, the Atma itself goes beyond this life and it goes into the next life and it performs the same functions. Now, why is this particular selection chosen? Because it talks to you about the waking state. So in our waking state, what does the Atma do? It creates the functions of thinking. It creates the functions of vibration. In fact, one of the very interesting observations that is made is that when you chant a particular mantra, for example, Gayatri Mantra or Om Namah Shivaya, and you keep on chanting it. So what it does is it changes the frequency of the prana within your body, which is why it has a very positive impact. And therefore it transforms you. It transforms the interaction between the Atma and the Deha. So when the Deha, because obviously the chanting is happening in your mind or chanting is happening with the help of your tongue, the articulation is a vibration, the kampana, in a different sense. So when all this keeps impacting, it obviously helps deepen or it helps alter the interaction between the Atma and the body. And that is just a side lesson that we learn from this particular selection that we have from the Brihadaranyaka Upanishad, which is talking about the waking state. That's what we need to understand in the overall selection logic. And I'll go back once again to put the selection logic. In the overall selection logic, we are looking at how to understand the waking state, because the waking state is also representative of the presence of the spirit. If there is no Atma, there is no waking state, there is no dream state, there is no sleep state.
There is no death because death has to happen for the body. So when the Atma is associated with the body only, you will say that it has died. If it is simply present as the Paramatma, then it does not actually make any kind of difference whether it is alive, because there is no body for the death to happen. Now let's look at this particular shloka that we have from the Mandukya Upanishad. राज, इसको जरा सा बेटर एक्सप्लेन करने के लिए मैं इसका हिंदी ट्रांसलेशन प्रॉपर्ली पढ़ दूं जरा, बिकॉज हिंदी नहीं आया इसमें। हाँ, हिंदी नहीं आया है इसमें। हाँ, तो हिंदी प्रॉपर्ली पढ़ देता हूँ मैं, तो बहुत आसान लगेगा ये। ठीक है। ओके, ये जो सत्यव्रत सिद्धांत अलंकार का एकादशो उपनिषद है ना, इसमें बहुत अच्छा ये दिया गया है ये। करेक्ट। वो मतलब अगर आपको भी वैसे कहीं और नहीं मिल रहा हो तो इसी बुक को रेफर कीजिए, तो बहुत इजीली बताया गया है। ये कॉन्टेक्स्ट इस तरह का है कि राजा जनक और ऋषि याज्ञवल्क्य के बीच का संवाद है ये। जो ये तृतीय खंड है, तृतीय ब्रह्मांड बोलते हैं इसको। इन्होंने क्या किया था कि ऋषि ने सोचा था कि इस बार मैं कुछ नहीं बोलूंगा, बट राजा ने पहले जो है उनसे एक वरदान मांग रखा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं जो प्रश्न पूछूंगा उसका उत्तर देना होगा। तो उससे पहले राजा ने ये पूछा था, इससे जस्ट प्रीवियस श्लोक में, कि आदित्य और चंद्र के अस्त होने पर, अग्नि और वाणी के शांत हो जाने पर, जब जागृत अवस्था नहीं रहती है, तब पुरुष को ज्योति प्रकाश कहाँ से प्राप्त होता है। पुरुष, जो इसमें पुरुष वर्ड कहा गया है, याज्ञवल्क्य ने कहा आत्मा से, और स्वप्नावस्था में आत्मा की ही ज्योति से यह बैठता है, चलता फिरता है, काम करने के बाद घर को लौट जाता है। ये इससे प्रीवियस श्लोक है। अब इस श्लोक का अर्थ पढ़ते हैं कि राजा ने फिर पूछा वह आत्मा कौन सा है। तो राजा जनक पूछ रहे हैं याज्ञवल्क्य से कि वह आत्मा कौन सा है। तो इसमें विच इज सेल्फ, कतम आत्मेति। याज्ञवल्क्य ने कहा आत्मा का स्वरूप विज्ञान में है। तो हमें याद होगा, वो हम तैत्तिरीय उपनिषद में हमने 5 कोश की बात की थी। तो अब ये विज्ञान में कह रहे हैं कि आत्मा का स्वरूप विज्ञान में है। जागृत अवस्था में वह बहिर्ज्योति होता है और उसके बाद अंतर ज्योति हो जाता है। स्वप्नावस्था में उसमें उसकी ज्योति हृदय में और सुषुप्तावस्था में प्राणों में प्रकाशित होती है। तो स्वप्नावस्था में हमने आत्मा की ज्योति हृदय में मिलती है और सुषुप्तावस्था में प्राणों में प्रकाशित होती है। वह स्वयं सब अवस्थाओं में एक समान है। आत्मा हर अवस्था में एक समान है और जागृत तथा सुषुप्त इन दोनों लोकों में आता जाता रहता है। जागृत और सुषुप्त को इन्होंने 2 लोकों की तरह से बोल दिया है। और जागृत लोक में आकर मानो चेष्टा करने लगता है, सुषुप्त लोक में जाकर मानो ध्यानावस्थित हो जाता है। जागृत तथा सुषुप्त इन दोनों के बीच के स्वप्न लोक में जाकर वह इस दुनिया को, जो मृत्यु के ही नाना रूप है, लांग जाता है। तो which represents the forms of death, ignorance। इसमें कहा कि जो जब जागृत अवस्था में और सुषुप्त अवस्था में, इन दोनों लोगों के बीच स्वप्न लोक में, इट इवन क्रॉसेस द डेथ, ये वाली बात कर रहे हैं वो। मृत्यु के ही नाना रूप है, लांग जाता है। स्वप्न लोक को उन्होंने कहा है कि एक तरह का डेथ का ही एक एक्सपीरियंस है वो, और उसको भी वो क्रॉस कर जाता है बिकॉज ऑफ दिस पुरुष। ये इनका हिंदी ट्रांसलेशन है। Yeah, I think that was very apt. In fact, I had read it earlier, but yes, it's very good. बहुत अच्छा To have the whole idea. So the point is that I think the point that is being made here is the connecting thread that we have between the Sushupta Avastha and the Jagrut Avastha and the Swapna Avastha is the Purusha. तो जब तक ये सूत्र की तरह नहीं होता है, ये तीनों अवस्थाओं को एक ही देह में बांध के रखता है। और वैसे अगर अवस्था को देखा जाए तो, क्योंकि हमें इसमें कुछ आगे समझ नहीं आता है, इन द सेंस जब हम नींद में होते हैं, सुषुप्ति में होते हैं, तो जागृत दुनिया हमारे सामने नहीं होती है, तो वो मृत्यु की तरह ही है, क्योंकि हम कुछ बाहर से समझ नहीं पाते हैं। So I think the point has been made very clear that the Purusha is the driving force, the unaltered driving force behind the 3 states, including the dream state. Is that okay Yeah. for understanding? Any questions that we have on this, Rajesh and Sunil?
Yeah, now it is clear. After reading in Hindi, I am also clear कि पूछा क्या गया है और क्या आंसर किया गया है. Yeah, absolutely. In fact, the Ekadasha Upanishad you find is a wonderful translation. कुछ देर डिस्कस कर लें, फिर उसके बाद नेक्स्ट कर लेंगे अगर ऐसा कर सके. So, so Rajesh, you have any thoughts? एक चीज पॉइंट था मेरा, ये हार्ट हैज बीन सिनोनिम विद इंटेलेक्ट. नॉर्मली माइंड इज इंटेलेक्ट एंड एट द सेम टाइम कोऑर्डिनेशन बिटवीन, जैसे कहा जाता है कि दिल से पढ़ना या दिल से याद करना, तो वी रिमेंबर बाय हार्ट. सो जस्ट रिपीटेशन ऑफ की जो इंटेलेक्ट का रोल है, कि हाउ द हार्ट एंड माइंड आर रिलेटेड विद दैट, दे आर क्लोजली रिलेटेड, बट नॉर्मली माइंड इज सेड टू बी सोर्स ऑफ इंटेलेक्ट, नहीं, समथिंग. ये जो वर्ड हार्ट है, ये हमारे शास्त्रों में अलग अलग तरीके से इस्तेमाल की गई है. तो हम इस हार्ट को मैकेनिकल जो हमारे मस्कुलर जो हार्ट है उसके साथ आइडेंटिफाई नहीं करना चाहिए. ओके, ये जो हार्ट है ये हमारे हृत माने जो सेंटर है, सेंटर ऑफ कॉन्शियसनेस को हार्ट बोलते हैं. ओके, तो उसके अंदर ज्योति होती है, उसको हृदय ज्योति बोलते हैं. अब यूं समझिए कि अगर पुरुष है तो पुरुष को हम ये भी कह सकते हैं कि वो हमारा दिल है. सो वन मस्ट बी वेरी केयरफुल नॉट टू इंजेक्ट एनी मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग ऑफ द हार्ट. हार्ट माने जो बीच में होता है. अब क्योंकि हमारा मस्कुलर हार्ट बीच में होता है उसको ऑफन हार्ट कहते हैं, but we should keep it aside. Then there is a problem with this English word mind and intellect. इंग्लिश में सिर्फ माइंड यूज करते हैं, इंटेलेक्ट बहुत कम यूज करते हैं. लेकिन जब हम संस्कृत को ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में, तब मनस होता है माइंड, बुद्धि होती है इंटेलेक्ट. And Buddhi's job is to give viveka. Mind's job is simply to have lot of emotions and keep collecting information from your ज्ञानेंद्रिया. ज्ञानेंद्रिया से आपका स्टिमुलस आता है, वो पहले जाके मन में बसता है, तो मन में जो है भावनाएं उठती हैं. उन भावनाओं माने राग द्वेष होता है. उस राग द्वेष पे आप कैसे निर्णय लेंगे वो बुद्धि से होता है. फिर बुद्धि अपने निर्णय को मन के पास छोड़ देता है. फिर मन जो है कर्मेंद्रिय को आज्ञा देता है कि आप ऐसे करें. तो आपने मीठा देखा, आपने रसगुल्ला देखा, तो सबसे पहले आंखों के अंदर रसगुल्ला की ज्योति गई, फिर वहां से मन के अंदर गई, फिर मन ने कहा हमें तो रसगुल्ला बहुत पसंद है. फिर मन ने जो है बुद्धि को कहा भाई इतना पसंद है, आपने पिछली बारी क्या किया था. तो बुद्धि जो है स्मृति नाम की जो मेमोरी बैंक है वहां से उठाती है कि भाई जब भी हमने रसगुल्ला देखा है हमने कम से कम 3 खाए हैं. ठीक है. तो फिर वो आदेश देता है मन को, ठीक है अब की बारी 4 खाओ. तो आपने जो है अपने हाथों को आदेश दिया. किसने? बुद्धि ने मन को बोला, मन ने हाथों को आदेश दिया कि आप 4 रसगुल्ला उठाएं और खाएं. So this is the sequence that we need to understand. Okay? वो होलनेस में है, होलनेस में समझना है. ठीक. हाँ हाँ. ठीक. Okay. So 1 minute, let me just make a change. This is Dvaita spirit. Okay. Then we come to one more explanation of the waking state. Now we have to understand कि हमारा प्राइमरी मोटिव क्या है इसमें. हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इस सेक्शन में जेम नंबर 13 और 14 में ये है कि वेकिंग स्टेट को समझें. अभी 10 मिनट है हमारे पास, 1 मिनट. तो ये जो है मांडूक्य उपनिषद का श्लोक है. मांडूक्य उपनिषद बहुत बहुत प्रधान उपनिषद माना जाता है क्योंकि इसमें सिर्फ 12 श्लोक हैं और इन 12 श्लोकों में जागृत, सुषुप्ति और स्वप्न अवस्था का पूरी तरीके से अन्वेषण हुआ है. तो क्या कहते हैं इस श्लोक में? जागरितस्थानो वही प्रज्ञः सप्तांगः एकोनविंशति मुखः स्थूल भुग
वैश्वानरः प्रथम पाद। सो दिस इज, अच्छा इसमें जो है बहुत सारे रेफरेंसेस हैं ऑफ सर्टन नंबर्स। तो वो क्या है जरा देखें। तो इसमें जो है वर्ड टू वर्ड तो मिल जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ छांदोग्य और बृहदारण्य के उपनिषद जो हमारा वेबसाइट है वो वर्ड टू वर्ड नहीं दे पाता है, तो उसको जो है बाहर से निकाल के डालना पड़ता है। तो मैं अगली बारी जब जब छांदोग्य है आप मेरे से पूछें, मैं आपको उसका स्कैन भेज दूंगा, फिर आपको जो है वो देवनागरी लिपि कैसे डालना है वो भी अगली जो है प्रैक्टिस हो जाएगी। तो जाग रीति स्थानम, he whose place is wakefulness, okay, वाही प्रज्ञ है, who is wise in the outward, वाही वो वाही नहीं है, वो वाही प्रज्ञ है, जिसकी प्रज्ञा जो है बाहर के विषयों में है। तो जब जागृत होते हैं तो आपकी प्रज्ञा बाहर की विषयों में लगी रहती है। सप्तांग, जिसके 7 अंग हैं। अब ये 7 अंग क्या है मैं आपको बताऊंगा। एकोन विंशति मुख है, जिसके 19 दरवाजे हैं और 19 मुख हैं। स्थूल मुख, और इन एकोन विंशति मुखों और इन सप्त अंगों के साथ वो स्थूल मुख, वो हमारे सामने जो स्थूल विषय है उसको भुंजता है या भुगता है या उसको एंजॉय करता है। वैश्वानर, ये जो है ये पुरुष को भी बोलते हैं, प्रथम पाद है ये वैश्वानर, माने जो कॉस्मिक पुरुष जो है अपने अंदर होता है, और जो महान पुरुष होता है उसको हिरण्यगर्भ भी बोलते हैं और उसको वैश्वानर भी बोलते हैं। तो ये प्रथम पाद है इन द सेंस इन दी मांडुक्य उपनिषद, दिस इज द फर्स्ट फीट ऑफ द वैश्वानरा। वैश्वानर के 4 पाद जो है माने गए हैं। पहला पाद जो है जागृत है, जो कि आपके सामने है। दूसरा पाद या पैर जो है सुषुप्ति है, माने गहरी नींद। तीसरा पाद है स्वप्न या सपना देखना। और चौथा जो है वो तुरीय है, क्योंकि इन तीनों गुणों को नहीं बोलेंगे, इन तीनों अवस्थाओं से परे है, तो उसको जो है चौथा पाद बोलते हैं। तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन अभी देखते हैं, फिर हिंदी भी देखते हैं, फिर डीपर मीनिंग में जाएंगे। तो ही हुज प्लेस इज वेकफुलनेस, माने जो जागृत है और जो बाहर की चीजों में अपनी बुद्धि को लगाए हुए है, who is wise in the outward, who has 7 limbs, to whom there are 19 doors, who feels and enjoys the gross objects, Vaishvanara, he is the first. तो ये क्या है, ये जो 7 अंग हैं ये कौन से हैं, और ये जो 19 मुख हैं ये कौन से हैं, इनको समझना है। तो अभी हम आपको बताते हैं कि ये क्या है। यस, सो जो 7 अंग हैं वो क्या है। पहला अंग जो वैश्वानर, माने जो विश्व रूप है, मान लीजिए जैसे हमारे भगवत गीता के 11वें अध्याय में विश्व रूप का जिक्र किया है। तो ये 7 अंग हैं। सिर, माने वैश्वानर का सिर। फिर द सन इज हिज आईज, तो दूसरा हुआ। एयर इज हिज ब्रेथ, तीसरा हुआ। स्काई इज द बॉडी, फोर्थ। वाटर इज द लोअर ऑर्गन, फिफ्थ। एंड अर्थ इज हिज फीट, सिक्स्थ। तो एक कैसे मिस हो गया। हेड हो गया हेवन, सन हो गया आइज 2, एयर हो गया ब्रेथ 3, स्काई हो गया बॉडी 4, वाटर हो गया लोअर ऑर्गन 5, एंड अर्थ हो गया 6। तो 7 कैसे हुए। हेड, हेड, ओके, नो आई लुक एट सम अदर वन। यहाँ पे जो है नंबरिंग में थोड़ा गड़बड़ है। लेट मी टेक द मांडुक्य उपनिषद एज इन राधा कृष्णन, लेट अस चेक दैट आउट। में वाणी आ गया आपके में? नहीं, वाणी नहीं आया है तो उसमें। वाणी वाणी लिखा है साथ में है। सिर, आंख, कान, वाणी, फेफड़े, हृदय तथा पांव, तो वाणी भी है। हाँ हाँ हाँ, वाणी भी है, तो वही है, यहाँ पे मिस हो गया है। तो ये जो रामकृष्ण मठ का है उसमें वाणी जो है मिस कर दिया है। वाणी लेट और मी, लंग्स दो हो गया, छुपे पड़े लंग्स। हाँ हाँ, तो वाणी मिला के 7 हो गया। लेट मी डू वन लिटिल क्रॉस चेक विथ राधा कृष्णन। तो राधा कृष्णन ने कहाँ दिया भाई। लेट अस जस्ट चेक राधा कृष्णन मांडुक्य उपनिषद 693 और उसका तीसरा श्लोक 693। वेद जो है वो वाणी है।
693. Yes, 1 minute. I'll just check that out. 693. तीसरा. ओ अच्छा. तो ये जो 7 हैं ये छांदोग्य उपनिषद से है, तो अभी छांदोग्य उपनिषद जाते हैं. छांदोग्य V8. 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 VH 18:2. हाँ, 18:2. इसमें क्या लिखा है भाई? इसमें तो कुछ भी नहीं. हाँ, 18:2. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. सो हेड है एक, आईज है, ब्रेथ है, बॉडी है, ब्लैडर है, फीट है और अर्थ है, चेस्ट है. ओके. तो okay, so we'll only take it that there seems to be a slight variation in the way these 7 limbs are being described by different commentators. Okay, but we understand basically what it is saying is, it is indicating that certain important parts of a human body are also there in the Brahmand. जैसे पिंड है वैसे ब्रह्मांड है कहा जाता है. सो दैट इज द फर्स्ट इक्वलेंस दैट ही इज मेकिंग, कि जागृत अवस्था में पूरा ब्रह्मांड जगह है जैसे कि पिंड में आप जगह हैं. एंड देयर इज दिस इक्वलेंस ऑफ द 7 limbs. Okay, whether it is Vani or whether it is Udara, we can always do a little more of research, but most of the items have been commonly identified from the source of Ekadasha Upanishad, which is being referred by Sunil ji and the S. Radha Krishna's Upanishad. But of course, I will clarify this point after further reference to other sources. So that is one thing which we will do post this meeting. Now, what is 19 mouths? That is, I think, fairly easy. आपके 5 ज्ञानेंद्रिय हो गए, 5 कर्मेंद्रिय हो गए, 5 प्राण हो गए और 4 अंतःकरण हो गए. Very, very simple. So what are your Gyanendriyas? We know. Gyanendriyas are sense of smell, sense of touch, sense of sight, sense of taste, and sense of hearing. Yeah, hearing. So that's 5. Your Karmendriyas are your sense of articulation, speech, your legs for locomotion, your hands for grasping, then your organ for reproduction and organ for evacuation, excretion. तो ये आपके 5 कर्मेंद्रिय हो गए. आपके 5 प्राण क्या हो गए? पाना, प्राणा, अपाना, व्याना, उदाना, समाना. अपाना, अपाना स्व, व्याना स्व, उदाना स्व, समाना स्व. या ब्रह्मणा, प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा. तो ये समान है, उदान है, प्राण है, व्यान है और अपान है. ये आपके 5 कैटेगरी के प्राण हो गए जो कि हमारे बॉडी में पाए जाते हैं. और जब भी आप खाना खाते हैं तो आप भोजन को इन प्राणों को डेडिकेट करते हैं, एटलीस्ट दैट इज द ट्रेडिशन, ताकि जो भी अन्न आपके अंदर जाता है वो इन प्राणों को शक्ति दें. तो ऐसा माना जाता है कि खाने के टाइम पे प्राणों को याद करना चाहिए. तो आपके 5 प्राण हो गए. ये भी कहते हैं ना कि हमारे 5 प्राण ही चले गए थे, इन द सेंस दैट all these 5 pranas which keep me alive are the ones that will actually be instrumental to me being a living entity. So you were telling about pran and then further. Yes. So the 19 mouths or the 19 functions are the Gyanendriyas, 5 of them, Karmendriyas, 5 of them, and the 5 pranas, because the 5 pranas are found in the body. Then, so we have added up to 15 now. We have to add 4 more, and these are the 4 elements of the Antakaran. Antakaran में क्या होता है? बुद्धि, मनस, अहंकार और चित्त. और इसको कैसे समझते हैं? अलग अलग टर्मिनोलॉजी है, लेकिन जनरली वेदांत में अंतःकरण 4 भागों में होता है. बुद्धि आप जानते हैं,
बुद्धि का काम है विवेक, मनस का काम है सभी ज्ञान इंद्रियों से, स्टिमुलस को क्या बोलेंगे हिंदी हिंदी में? स्टिमुलस, हाँ, हिंदी में क्या बोलेंगे? स्टिमुलस को जैसे सिग्नल बोलते हैं, तो अच्छा कोई शब्द मिलेगा अभी बताते हैं। कि बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, क्योंकि मैं भी अपनी हिंदी जो है शुद्ध कर रहा हूँ। खैर, सोचेंगे। Anyway, we understand stimulus and that is the function of the mind. Then the function of the ahamkara is, भाई मैं अलग हूं आपसे। जब तक भाई मेरा नाम राजशेखर है, आपका नाम राजेश है, आपका नाम सुनील जी, आपका, तो ये जो है अलग सोचने का जो है वो अहंकार है। और जो भी हमारी हमारी जो जो भी हमारा अनुभव है, उसका जो याद है वो चित्त में होता है। ऑफ कोर्स चित्त का भी अलग मीनिंग होता है, लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में चित्त को हम मेमोरी बैंक कहेंगे। तो ये मेमोरी बैंक, ये अंतःकरण के 4 पार्ट हो गए, ये प्राण के 5 पार्ट हो गए, ज्ञानेंद्रिय 5 हो गए और कर्मेंद्रिय 5 हो गए, तो आपके 19 मुख हो गए। तो कहने का ये मतलब है कि आपके पास ये 19 फंक्शनैलिटीज हैं जो आपको एक ह्यूमन बीइंग बनाती हैं। और मैं आपसे कह रहा था, ये मुझे एक अच्छी बात जो है दिखी इस कमेंट्री में, कि अभी आपको मैं ब्रह्मांड और पिंड की बात कर रहा था। तो यहाँ पे कहा गया है कि जब ब्रह्मांड को देखा जाता है और उसके आत्मा को देखा जाता है, तो उसको विराट बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे विराट का जिक्र नहीं है। और जब पिंड को सोच के बारे में सोचते हैं, दैट इज ह्यूमन बॉडी के बारे में सोचते हैं, तो उसको वैश्वानर बोलते हैं। तो जब जब इस पिंड में ये 19 मुख आते हैं और ये 7 अंग आते हैं और जुड़ते हैं, तो हम वैश्वानर बन जाते हैं। तो विराट से हम वैश्वानर बन जाते हैं। तो विराट में और वैश्वानर में समानता है, क्योंकि macrocosm and microcosm reflect the same reality. This is in Angrezi, which you and me will definitely understand. So macrocosm is reflected in the microcosm, and microcosm is a subset of the macrocosm. So when we talk about the macrocosm, it is called Virata. When we talk about the microcosm, it is called Vaishvanara in the terminology of the Mandukya Upanishad. So और ये जो है स्थूल है, ये स्थूल, ये जो शरीर जो आपको दिखता है, इसके 7 अंग हैं और ये स्थूल शरीर है, और ये जो है जागृत अवस्था भी है, इसीलिए इसको इस सेक्शन में डाला गया है। तो जागृत अवस्था है और स्थूल शरीर है, तो आप वैश्वानर के ये जो है रिप्रेजेंटेटिव हैं। क्या, हाउ डू से रिप्रेजेंटेटिव यार, हिंदी बड़ी खराब है यार, ठीक टाइम पे you are the representative of Vaishwanara here. So anyway, we understand that. I'll also have to really look into my dictionary. ये ठीक है। वैश्वानर का कंसेप्ट थोड़ा सा कहीं और मिलेगा, ये समझने की जरूरत पड़ रही है। हाँ, तो वैश्वानर का कॉन्सेप्ट 1 मिनट में आपको बताता हूँ। आज ये अवेकनिंग सही हो गई। वी आर नॉट वन इंडिविजुअल आई, 19 की टीम है, रिसोर्सेज अब हो गए, एम्पावरमेंट हो गया, बढ़िया। वी आर नॉट अलोन। तो अभी तो समझते हैं कि 5 ही थी ज्ञान इंद्रियां, ये वो मतलब सॉरी 5 इंद्रियां, इंद्रियों के नाम से जानते थे, अब ये तो इतना ज्यादा टीम है कि वी कैन डू एनीथिंग। कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, प्राण और अंतःकरण, ये 4 मूल रूप हुए। इसको 4 को फिर 19 में डिवाइड करा जाएगा। 5, 5, 5 and 4। करेक्ट करेक्ट, 5 into 3 15। और तो अंतःकरण हमको सबको काम देना है, मतलब वी हैव टू कीप देम यूटिलाइज्ड, अदरवाइज वो डोरमेंट हो जाएंगे। यस यस यस, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। हाँ, क्योंकि जागृत अवस्था का मतलब यही है कि सब काम में लगे हों। और ये जो है ना, जो वैश्वा योग का सिद्धांत है, उसमें भी ये बात आती है। अच्छा, तो मैं आपको पढ़ रहा हूँ वैश्वानर का, ये कंसाइज एनसाइक्लोपीडिया ऑफ हिंदुइज्म है। इसमें A to Z, आई मीन
वॉल्यूम 3 R to Z में वैश्वानर का मैं आपको डेफिनेशन दे रहा हूँ, right? So Vaishwanara means one who leads all human beings. So this word has been used in several senses. It is one of the names of Agni. In the Bhagavad Gita, it refers to an aspect of Krishna, as also in the Brihadaranyaka Upanishad. In Vedanta philosophy, it refers to the Brahman or Atman associated with the whole created world. He is also called Vaishwanara because he leads all human beings to their punya or papa. Okay. तो माने वैश्वानर जो है आपके अंदर जो एंटिटी है आपको वैश्वानर कहा गया है. Okay, anyway, we've done only one unit, unit 6. We will continue with unit 7 the next time, but I think that is 15 and 16. But yes, I think Upanishads, we don't have a target. We only have understanding as a target, correct? So Because understanding is 15 is very long. 15 is very long. Yeah, 15 is very long. So we will end the session today. We will again meet next week. So thank you so much for your patience and attendance and enthusiasm. Thank you very Thank much. you so much. Thank you. Okay. Bye. Thank you.